Can we take the music instead? Okay, just a second. Okay, welcome everybody. Jai Gurudev. Are we good to start? Do we have Pavan Bhaiya here? Yes, I'm very much here. Jai Gurudev. Right. Definitely. Welcome, everybody. Firstly, thank you so much to everyone for taking time out on a busy Friday evening. And of course, right fresh out of a beautiful puja with Puja Guru, right? For those who saw it. So, great. Firstly, tap yourselves at the back because you made a great decision to attend this very empowering and enriching session with our dear Pavan Bhaiya. I think for all of us who've been in Art of Living for a long time, have known Pavan Bhaiya very closely, and he's a very eminent personality, towering pillar of the Art of Living Delhi NCR chapter. He's been with Art of Living for 18 years, and he's known by his signature trademark smile. But there's something very prolific, some other thing that he's known for, which is his very strong professional acumen and accomplishments outside his Art of Living journey. So, Bhaiya, if you allow me for 2 minutes, I know you wouldn't want me to go too much about it, but I still think that we should introduce you to our audience today. So, Pavan Bhaiya is a chartered accountant by profession and a very accomplished business leader. So, Bhaiya currently serves as the Chief Financial Officer, that's CFO, of the Publicis Sapient Group, and he's had a prolific career for 28 long years. And some of us could probably not have even clocked that much age right now, right, on this session. He's got a very strong business acumen. He's mastered careers across global organizations. I mean, you name it: Price Waterhouse, Eon Hewitt, Fidelity, Hewlett Packard, just to name a few. All of them prolific. And Bhaiya has created this immense, what should I say, legacy of his business prowess, and he's mentored so many careers, which is exactly what he we want him to do today, and help us really understand what a quick mindset to success really means. Because from whatever we achieve in life, we all agree that a strong, stable, accomplished career is a very big cornerstone of our success in life in general. So हमारा अध्यात्म भी बहुत जरूरी है, हमारा ये जो हमारा भौतिक जीवन में जो सक्सेस है प्रोफेशनली वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. So today, Bhaiya, I would like to take this opportunity on behalf of all of us seekers who would like to know how to really maneuver our way through this journey. It's not easy, but it's also very compulsory, right? It's important to have a good, stable career. So, should Well, we shoot? yeah. Confirm? So first of all, thank you so much, Juhi, for having me here, and a whole lot of members and the team who made it possible. So Nilanshu is here, Shilpa is there, Kanika is there, Shubham, so many of them. So thank you so much, and thanks to all of you for being here. It is such a pleasure to share my experience. I'm today really cherishing it because 35 years of experience, at least I can share it and benefit some other lives. So thank you so much for being here. Just one request. This is all about ourselves, right? Yes. Do you want to have a very superficial discussion, all of you, or do you want to have something a little more intimate? Yeah. You want intimate? How many of you want intimate discussion? All of you, right? So my sincere request, just open your cameras. When I see you, the connect and the ability for me to share my thoughts is going to be so much better. So one small request. Thank you. Yeah, Julie, over to you. So, I think we'll start from the start. So, Bhaiya, when you started out, and let's assume you're 25 years old, okay? So, I mean, I I'm wish I sure, was. and I'm sure if you were not so good at manifestation, you would have not thought कि मैं CFO बनूंगा, मैं ये करूंगा. So, what was your mindset when you started, and what is it that you worried about most, or were you skeptical about most, और कहाँ पहुंचना है? So, just tell us something about that. देखो, अगर मैं सच बोलूं तो मुझे पता था मैं सीएफओ बनूंगा. No, no, of course not. Of course not.
I must say that I come from a very humble background. I've grown up in Old Delhi, so very, very humble background. So I could never think of CFO. I didn't even know what a CFO is actually at that point of time. But I think one thing which I know and I remember at that time was my extraordinary passion to succeed. एक जुनून था, किसी किस्म का एक जुनून था कि कामयाब होना है. And that junoon kept me going. But I think the anchors for me were really my family and my amazing parents who gave me the best of the education. And they gave me amazing value system and a lot of love. And then when you say 25, actually by that time, I'd already faced a lot of failures. So what was also there with me to equip me in the success was my failures. So I think that is how I started, and that is how I thought at that age that you're saying 25. दैट्स अ ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव. सो अब इसकी बात करें, फैमिली फेलियर्स, चलो आपका बहुत साथ निभाया इन दिस जर्नी, बट व्हाट टॉप स्किल्स और एप्टीट्यूड वुड यू एट्रीब्यूट द सक्सेस टू? अगर आपको इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखें और हम बोलें कि ऐसे क्या स्किल्स थे जो होने चाहिए या आपने इक्विप करे या थे आप में, दैट वी ऑल कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम एंड इम्बाइब. Yeah, so I think so. My first startup was at the age of 17. I don't know how many of you know. So I started a toy manufacturing factory school. I gave my 12th papers, and after that, I fought with my parents, and my parents were kind enough to allow me at that point of time to start that factory. It was a toy manufacturing factory. But I think but they gave me two things as conditions to start that factory. One condition was, hey, you have to complete your graduation. So I said, okay, and they said you have to complete regular graduation. So I said, I don't know what that means. Throughout the day, I'm going to be running the factory. मैं factory चलाऊंगा तो क्या करूं? तो वहां पे इवनिंग कॉलेज होता था, जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली कॉलेज यूज्ड टू कॉल इट. तो मैंने वहां पर एडमिशन ले लिया. So I was making sure that there was a little bit of hedging I was doing with all the risks that I was taking. So I think that was sort of one thing that was coming my way. And then the junoon was there. एक अंदर से ना कॉन्फिडेंस था कहीं ना कहीं that I can do it. कुछ भी करूंगा, I can do it. The other thing that I did was 3 साल मैंने फैक्ट्री चलाया. 3 साल फैक्ट्री चला के कुछ कारण से, somebody dissed me or whatever, something happened, and somehow that factory I had to close. And when I closed it, you know, at that time I didn't realize, but there was also one innate, like you're saying, skill or aptitude. There was somewhere that aptitude or skill or saying, hey, let me cut my losses early on. So rather than lingering on, a lot of us actually carry on with, we try something and we just carry on and on and on. So I think somewhere that happened. So multiple failures throughout. My family was with me. But I think the biggest thing that happened to me was at the peak of my career. This is way back in 2008, 2009. How many of you remember 2008 recession? You all remember? A lot of some of you were not born maybe at that time, but so all that recession time, I was at the peak of my career. I was the Asia Pacific CFO for a very, very large multinational at that time. और उस वक्त because of recession, I lost my job. Okay. And thankfully, I really thank God and thank Guru and thank whoever divine for that. I had already done Art of Living course by that time, about a year before that. And I had also done 2, 3 courses. So I'd done DSN, I'd done advanced course. And I was practicing very, very regularly. Me and my wife were very regular at practicing. So what really helped me at that time was that, come what may, I kept failing, I kept trying. I kept failing, I kept trying. And I think that energy that I got, that confidence that I got, and more than that, the mind was always equanimous. I don't know what was happening, maybe because of that meditation and all. Always stayed in that state of equanimity and said, चलो, ये नहीं चला, कुछ और ट्राई करते हैं. चीनी की भी दलाली करी, चाइनीज रेस्टोरेंट भी चलाया, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टिंग भी किया. Lots and lots of businesses. I tried so many things during that 3-year time that I was jobless. But the energy, the happiness, the equanimity never fell.
it was not like I was not waking up worrying, in the morning. I was waking up with something new. Okay, now today I'll try something new. So I think aptitude, was can-do aptitude, but I think the biggest thing that helped me was, I would say, art of living courses. And, while advanced meditation course when I did, that made sure that my mind is clear of all the nonsense that we are carrying. And I think when I did DSN, it was another eye opener. So it gave me the zeal to act. A lot of times we have our clear mind, we know what to do, but that zeal to act, that energy and that confidence to act is not, and that is missing. So I think that is what came from a course about DSN for me. And ever since, I kept going on the journey. Now that you're saying I'm remembering it, I kept going on the journey even during that time, tough time. I kept doing all my sadhana, seva, satsang. In fact, I became teacher during that time, art of living teacher during that time. When I did not have a job, and I kept trying all these things. Plus, I was so long answer, but it was phenomenal. I think one more thing I must confess, through all the tough times, the confidence and all the energy and all the love and all the support that I got from my wife, she's been a true life partner for me, and you know her very well. Kanika is truly given me a lot of strength with every failure, with everything that I've gone through in life. So that's another. That's very beautifully put. And I'm sure all the wives will now go to their husband and give this as a perfect example. So he has a successful man who values his life partner. That's lovely. सो भैया एक तो अब फेलियर्स के आपने बारे में बहुत अच्छे से बताया फैंटास्टिक पर्सपेक्टिव एंड यू टोल्ड अस व्हाट योर होली ग्रेल वाज द सीक्रेट वाज द आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम्स एंड स्पेशली डीएसएन we'll come to that in a bit but I think a few of the questions that we received and a lot of people would now think ये तो बात हुई फेलियर्स को हैंडल करने की but sometimes you don't even have the luxury to quit and say this was a failure you have to still carry on और उसमें criticism बहुत आता है feedback ऐसा आता है जो which might not be true feedback. How to handle that kind of a situation where you're getting unnecessary criticism and feedback, and how do you still carry on? That's a very obvious thing. जैसे आप बोल रहे हो ना, जूही, I think all of us face a lot of criticism. People have opinions and they come and give opinions, and we are all getting impacted by opinions. And I tell you one story early on. I told you that I put up this factory and I had to close it down. जब मैंने फैक्ट्री बंद किया, तो at that time, what I decided was I'll do CA. And just to give you all a little background, I was very, very bad in studies. And I'm not joking. I was poor in studies. I used to pass on margin in school. Okay. I'm not joking, and I'm confessing in front of all of you. Very poor. Now, my dad wanted me to do CA. So after trying 3 years, dad ने बोला अब तूने अपनी मर्जी का कर लिया, अब थोड़ा मेरी मर्जी का कर लेना. बोला ठीक है. बोले अब तू CA कर ले. तो it was my decision also that I'll do CA. अब CA ज्वाइन किया, तो CA ज्वाइन करने के थोड़े दिन बाद मैं कनॉट प्लेस में गया. It's an interesting story. I went to Connaught Place, and my sister was with me, and both of us were going, and by chance I met my 11th 12th class teacher. Oh. Okay, so my class teacher से अरे जैसे होता है, अरे पवन क्या कर रहा है आजकल, तो बोला मैम मैंने CA ज्वाइन किया. तो मतलब आई एम नॉट जो ऐसे मोड़ CA ज्वाइन किया, तू कुछ और कर ले. तो मैंने कहा मैम क्यों, क्या नहीं, मतलब CA बहुत टफ होता है, तेरे बस की नहीं है. And and this is such a big thing, no? Acha, all of us, we know how important our class teachers are for us, right? उनसे कॉन्फिडेंस मिलता है या गिरता है. नाउ योर क्लास टीचर इज टेलिंग यू जस्ट फेल्ड ऑलरेडी. अभी मैंने फैक्ट्री बंद किया थोड़े दिन पहले, एक डिटर्मिनेशन लेके मैंने शुरू किया कि CA करूंगा, एंड माय क्लास टीचर टेलिंग मी दिस. So that happened, and then within 1 month I met an uncle of mine, and that uncle was a very, very renowned chartered accountant in Delhi. एंड बाई चांस मैं उनके घर गया, शादी का माहौल था उनके घर में, काफी लोग बैठे थे, पूरा जैसे बैठक होता है शादी का ऐसे बना हुआ था. मैं वहां पहुंचा तो उन अंकल ने पूछा अरे पवन आजकल क्या कर रहा है. गेस व्हाट वाज माय आंसर. मैं तो CA कर रहा हूं. एंड व्हाट वाज हिज आंसर, ही सेज, एंड ही इज अ रिनाउंड CA, अरे तू तो बीकॉम पास किए हुए है ना. मैंने कहा हाँ अंकल. ये बीकॉम पास वाले तो CA नहीं करते, CA कर ही नहीं सकते. So that was another blow. Now both these things happened within a span of 1 month. And I just started my CA. So anyway,
I kept going, and these things were there in my mind. And then finally I started to prepare. शुरू में 1.5 साल तो मस्ती होती है सीए में, आर्टिकल्स वगैरह चलती है। उसके बाद काम का टाइम आता है, जब आपको एग्जाम देना होता है, तो 3 महीने की छुट्टी लेके आप बैठ के एग्जाम देते हो। तो वो 3 महीने आया, और मैं तो इतना खराब था शेड्यूल, समझ में नहीं आया क्या शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। एंड माय डिटर्मिनेशन एंड माय विल यूज्ड टू ड्रॉप एवरी डे यूज्ड टू ड्रॉप। But then every time it used to drop, those two statements actually used to become fuel for me. So like you said, how I took my criticism again, मेरे को कोई इतना wisdom वगैरह कुछ नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन somehow, these two statements kept nagging me, and rather than pulling me down, I used to say, नहीं पवन, अब तो दिखाना है, तो दिखाना है। And I think that happened. And then after some time, I failed in CA. Okay, I failed thrice in CA. एंड देन एवरी टाइम आई हैव टू फेल अगेन, दिमाग में आता था नहीं, गिव अप नहीं करना, दिखाना है। तो आई थिंक माई एंड दैट इज एग्जैक्ट, आई एम ट्रूली, आई थैंक माई क्लास टीचर एंड दैट अंकल, that uncle is in heaven right now, but I thank both of them, because it is only because of those two people that I am here today. So when you say how do I take criticism, we have a choice. In my view, we can get down, we can drown ourselves listening to criticism, or we can make it a fuel for us. Somehow I made it a fuel for myself, and ever since, and that's another, that's a learning that's been going on with me. So even now I take criticism as okay, if I find something useful, great. If I don't find, दो भगवान ने कान दिया, एक से सुनो, दूसरे से निकालो, let go, खाली हो जाओ, बस इतना ही। That's a beautiful management lesson that I'm sure we all are carrying back today. So just एक तरफ criticism है, तो एक तरफ वो भी है कि sometimes you face a lot of office politics. कोई criticize नहीं कर रहा है, सब चुपचाप कर रहे हैं जो करना है, and sometimes they just make life tough, and it's a very natural thing. ये कोई सात्विक या तामसिक trait नहीं है, it just happens. उसमें have you faced something like that, and how did you meddle your way through this? Yeah, so I used to detest politics. I used to just like hate politics, and for a long time in my career, I didn't even realize, in spite of the fact I became CFO at the age of 32, very young success. But somehow I didn't realize politics. Maybe those companies that I worked for did not have politics. And then one fine day I joined a company and this was full of politics. And I said, shit, where have I joined? This is not my thing, I can't work here. But then again, there was a choice, and I remember Gurdev saying, जब तक कीचड़ में घुसोगे नहीं, जब तक उसे साफ नहीं कर सकते. So, the point was not about cleaning the politics. The point was, hey, do I run away or do I learn something? Okay. And in that company, I learned that trait of managing it. Okay. And उस कंपनी में ना एक कल्चर होता था, उसको कहते थे कैचअप कल्चर. So my meeting calendar would be full of half an hour meetings. दनादन सारा meetings, किसी किसी के साथ meetings होता था. And what I'm doing, what is the topic of the meeting? Catch up. सब कैचअप, कोई एजेंडा नहीं, कुछ नहीं, वहां बैठे हैं, गप्पे मारे हैं. एवरी मीटिंग वी आर जस्ट चिट चैटिंग, या तो किसी की बुराई कर रहे हैं, तो किसी की अच्छाई कर रहे हैं, या किसी के बारे में पूछ रहे हैं, या क्या चल रहा है. इज लाइक जनरल चिट चैट. Okay, why was I doing that? So I learned from somebody at that point of time. I had a mentor, and I would suggest that all of you also start to have mentors. And one of the mentors in that company said, "Pawan, यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा. यहाँ पे तू मीटिंग कर रहा है, काम की बात कर रहा है, काम के लिए मीटिंग कर रहा है, वो सब नहीं चलेगा. You should have something called a stakeholder map." How many of you have heard of stakeholder map? कितने लोगों ने सुना है stakeholder map? किसी ने नहीं सुना, किसी ने, दो चार लोग ने सुना है. ओके. तो ऐसे ये स्टेक होल्डर मैप क्या था? कंट्री का मैप तो सुना है, स्टेक होल्डर मैप क्या होता है? तो देन ही एक्सप्लेन. सो व्हाट स्टेक होल्डर मैप इज, यू रियली मैप आउट हु आर द डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स ऑफ योर रोल और ऑफ योर डिपार्टमेंट. Okay, who can influence, who are benefiting, who are supplying stuff to you in your department. Okay, चाहे लेने वाला, चाहे देने वाला, चाहे influencers, चाहे impactors, there are multiple stakeholders that are surrounding all of us. इसे पहले तो उसका मैप बना, उसमें लोगों का नाम डाल, उसके बाद you have to start to interact with them.
at some regular frequency, you have to make sure you are meeting them, telling them about good things that you are doing, good things that they are doing, थोड़ा सा ईगो मसाज भी, थोड़ा सा बातचीत क्या हो रहा है दुनिया में, कंपनी में क्या हो रहा है. It is just creating what Gurudev says, belongingness and relationships. Okay. And that is all politics is, to be very frank. You can, there is dirty politics also, but if you are in the circle and if you are managing your stakeholder, if there is a structured way that you are mapping your stakeholders and managing them and talking to them regularly, okay, nothing like politics will disturb you or worry you, because you are also creating a brand for yourself. You are also creating, and you are aware. See, the biggest thing is you are aware what is happening in the company, different department, different लोगों के साथ हो क्या रहा है, वो पता तो लगेगा. पता ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे. So I would very, very strongly suggest, if you don't know, read a little bit about stakeholder maps and create stakeholder maps for yourself. मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका पॉलिटिक्स को मैनेज करने का स्टेक होल्डर मैप बनाने का है. लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि जब पॉलिटिक्स होता है, इट गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ यू. मैंने तो ये देखा है, जब पॉलिटिक्स होता है, यू यू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड. डोंट यू एग्री विद मी? हाँ, तुम लोग लगता है नहीं, वी वर्क एक्स्ट्रा हार्ड ऑन आवर रिलेशनशिप्स. ओके, तो या तो प्रोएक्टिवली कर लो या डंडे खा के कर लो, करना तो पड़ेगा. एंड यू कैंट रन अवे. आई टेल यू, मैं 7 डिफरेंट मल्टीनेशनल्स में और एक आध इंडियन कंपनी में भी काम किया है. इफ यू थिंक दैट यू कैन फाइंड अ कंपनी जिसमें पॉलिटिक्स नहीं है, यू आर ड्रीमिंग. ओके, That's true. सब जगह है. और पॉलिटिक्स क्या होता है? व्हाट इज पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू यू? पॉलिटिक्स इज जस्ट डिफरिंग व्यू पॉइंट्स यार. तुम्हारा व्यू पॉइंट अलग है, मेरा व्यू पॉइंट अलग है. मैं तुम्हारे को अपना व्यू पॉइंट थोपने की कोशिश करूंगा, तुम मेरे ऊपर अपना व्यू पॉइंट थोपने का कोशिश. दैट्स ऑल पॉलिटिक्स इज, राइट? व्हाट एल्स इज पॉलिटिक्स? सी, एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट देयर सक्सेस, यस और नो? That's true. सब जने अपनी सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं. अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारा मैनेजर तुम्हारी सक्सेस के बारे में सोच रहा है ना, तुम बेवकूफ हो. आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू ओन योर डेस्टिनी. I have always owned long time back, and I don't want to name the partner. When Pricewaterhouse one part, I was leaving Pricewaterhouse, and he said, "Pawan, तू बेवकूफ है तो क्यों छोड़ रहा है Pricewaterhouse? इतनी बढ़िया कंपनी है." I was an assistant manager there, and I went in Hewlett Packard as an accountant. बोला क्यों छोड़ रहा है? तू बेवकूफ है. I am following your career. मैंने कहा please don't follow my career. I am following my own career. I am deciding my own destiny. Why I'm doing what I'm doing, what is my aspiration, what are my circumstances, what is my environment, what is my competency, what is my strength, what is my weakness. Only I know. Okay, we can give like we can get feedback from people, but own your destiny. So I think that's the key. I don't know if I digress from the question. Well, beautiful. Actually, that leads me to a leading question, which is so what you just did at PricewaterhouseCoopers. So, what gave you the self-belief to do that and to say, nahi, मैं जाऊंगा as an accountant? And because it takes a lot of confidence in yourself, चाहे वो 17 साल की उम्र में, it's about starting a toy factory or a Chinese restaurant 2008 or 9. It requires a lot of self-belief, which sometimes even after doing an Art of Living program, the happiness program, we may not feel that within. Yeah. Yeah. So, again, very early on, I was doing articleship in a company called SS Kothari and Company, which is a chartered accountant, mid-sized chartered accountant company. और वहाँ पे एक फोबिया होता था. वहाँ फोबिया होता था कि बिग फोर में तो बहुत खास ही लोग जाते हैं. अच्छा, अगेन मेरे बैकग्राउंड, तो मैं तो स्टडीज में बहुत खराब था, 3 बार सीए में फेल फूड, वो सब कहानी थी मेरे साथ. तो एक रैंक होल्डर सीए था उस कंपनी में, एंड उसको भी प्राइस वाटर हाउस में रिजेक्ट कर दिया. तो मैंने कहा ये तो चैलेंज लेने वाली बात है. तो मैं ऐसे ही सर उठा के, आई हैड कंप्लीटेड माय ऑल, आई वाज नियरिंग कंप्लीशन ऑफ माय आर्टिकलशिप, अपना सीवी बनाया, ऐसे ही लिट आई एम नॉट जोकिंग, ऐसे ही वॉक इन टू प्राइस वाटर हाउस ऑफिस, एंड एट द रिसेप्शन आई सेड मुझे किसी से मिलना है, मुझे प्राइस वाटर हाउस में काम करना है. तो जैसे जी ऐसे नहीं होता है, आप अपना सीवी छोड़ जाओ, विल कॉल यू. मैंने कहा नहीं, मुझे बात करनी है, आप किसी से मेरे को पार्टनर से बात कराओ. तो बोले ऐसे नहीं होता है. एंड आई केप्ट आर्ग्यूइंग हाफ एन आवर, कुछ करके किसी तरह से बाई चांस एक सीनियर मैनेजर, वेरी सीनियर लेडी was walking through the reception. I said, क्या हो रहा है? What is the argument? So I said, no, ma'am, I want to meet somebody. I'm determined to work in this company. It is my dream and I want to work here.
Now it is grace also which works, it is a lot of blessing of elders which also works. She says, "Are you ready to give me the interview right now?" I said, "Yes, I'm ready to give the interview right now." She said, "Okay, let's come in the room." I went in the room and they created a position at that time to get me in, and that position was called temporary training. Okay, I don't know what that meant, but I said, I wanted to work here, I've got the position. ठीक है, तो ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस अगर नहीं है ना तो कुछ नहीं हो सकता। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ तब आएगा जब फेलियर्स को झेलने के लिए तैयार हो गया। आर यू रेडी टू फेल? ओके, हर वक्त जीतने के लिए नहीं, अरे यार एक्सपीरियंस के लिए करना है, ठीक है, बट फिर भी कॉन्फिडेंस, अरे यार कर लेंगे, क्या है, ये कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, राइट? जब मैंने चाइनीज रेस्टोरेंट चलाया तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, अपॉर्चुनिटी सामने, अरे चला सकते हैं क्या, चलाएंगे यार, देखते हैं क्या होगा, ठीक है, बंद ही करना पड़ेगा, बंद किया ही तो क्या हो गया, तो समझ आ गया, आईपीएल चलवाया रेस्टोरेंट में बैठ के, कैन यू इमेजिन, आई वाज मेकिंग मेन्यू फॉर किट्टी पार्टीज all the stuff, you do all that stuff, बट कहीं ना कहीं अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। देयर इज यू नो मीडियोक्रिटी से नहीं जी सकते। या यू कैन बी सराउंडेड बाय पीपल हु आर ऑलवेज प्रेजिंग यू, आई टेल यू, बट आई थिंक इट इज वेरी क्रिटिकल टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग, हु आर गिविंग यू सम, कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर कमियां बता रहे हैं। हर वक्त ऐसे लोगों के साथ रहना भी जरूरी है, तभी रियलिटी चेक आएगा, नहीं तो मीडियोक्रिटी में ही हम रह जाएंगे, मीडियोक्रिटी में ही खत्म हो जाएगा करियर। समझ रहे हो आप? सो नेवर लुक एट योर लाइफ एज, अरे यार जो आसपास लोग हैं सब मेरी तारीफ करते रहे हैं, तारीफ, ऐसा कुछ नहीं। क्रिटिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ये मन तो यो यो होता रहेगा, मन यो यो हमेशा होता रहेगा। दिस इज अबाउट माइंड ना, ऐसे ही है मन, कभी अच्छा होगा। वी हैव टू ट्रांसेंड this mood paradigm. A lot of us are stuck with our moods. How many of you are stuck with the mood? आज मन नहीं है, आज ये करने का मन नहीं। I tell you, the biggest impediment to our growth is our mood, and this mood is so fragile. It is changing constantly. है कि नहीं? सबको बता दो मेरे, कोई है ऐसा जिसका मूड कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहा? एंड आज मौका है लेकिन मूड नहीं है, जब मूड है तो मौका नहीं है, तो मूड के साथ जीवन जिएंगे तो ऐसा ही रहेगा। I tell you. So, the one way to transcend mood is again, some of these courses, like, especially I found, DSN and AMP very, very powerful in getting away. अरे यार ठीक है यार, मूड नहीं है फिर भी करो, आगे बढ़ो, एक स्टेप लो, एक स्टेप लेते ही मूड बनने लगेगा। मैंने तो ये देखा है साथ, जिस दिन मूड नहीं है ना, किसी भी तरह से एक स्टेप आगे बढ़ा लो उस चीज में, और जैसे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना तो मूड बन जाता है। Have you all seen that? किस किस के साथ हुआ है ऐसा, बताओ। हाँ, सिर्फ एक स्टेप लेने की जरूरत होती है, बट वो स्टेप लेना हम गिव अप कर देते हैं, हम मूड के अंदर बह जाते हैं। तो आई वुड से प्लीज प्लीज, इफ यू वांट टू सक्सीड, एंड द बिगेस्ट, चाहे वो लेजीनेस है, चाहे प्रोक्रेस्टिनेशन है, चाहे डिप्रेशन है, ये सारी चीजें, व्हेन यू आर डिपेंडिंग टू मच ऑन द मूड, ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ मूड प्रॉब्लम, ऑल ऑफ दैट। तो भैया डीएसएन, मुझे जहां तक समझ आता था, डीएसएन हमको बस लेजी से चार्ज बनाता है जिससे हम सेवा कर सकें। डज इट ऑल्सो रियली इम्पैक्ट आवर करियर एंड आवर पोटेंशियल टू सक्सीड इन द आउटर लाइफ ऑल्सो? एब्सोल्युटली। मैं तो जैसे बताया तुम लोग को, 3 साल जब मैं बिगैर जॉब के था, उसके 3 महीने या 6 महीने पहले मैंने डीएसएन किया था। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, मैंने कभी अपना, आप देखो ना, आई जस्ट लॉस्ट माई जॉब फ्रॉम अ पीक ऑफ द करियर, राइट? मैंने कभी अपना काम, एक बार वो फैक्ट्री चलाया था बहुत पहले उसके, बट उसके बाद कुछ अपना काम किया नहीं। एंड व्हेन यू आर एट द पीक ऑफ योर करियर, यू वांट टू डू सम एंटरप्रेन्योरल थिंग, बट तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होती जंप करने की उसमें, यार छोड़ के, नौकरी अच्छी खासी हर महीने तनख्वाह आ रही है, वो छोड़ के अपना काम शुरू करो, यस और नो? वी डोंट वांट टू डू दैट। तो मेरा माइंडसेट उस वक्त क्या होना है, चले यार, दिस इज, नौकरी तो चली गई, चलो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, लेट्स स्टार्ट समथिंग। तो आई थिंक डीएसएन गेव मी दैट कॉन्फिडेंस, जो भी इतनी सारी चीजें मैंने करी।
आई वेंट एंड डिड माई ओन, पहले 3 जनों के साथ मिलकर कंसल्टिंग करी। उस कंसल्टिंग में चाइनीज रेस्टोरेंट भी चलाया, चीनी की दलाली भी किया, उसके बाद फेक एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी बना दिया, उसमें वो भी काम बेचा, सब कुछ किया, उल्टा सीधा सब। फिर साल भर बाद रियलाइज किया क्या कर रहा हूँ मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इतना बड़ा प्रोफेशनल हूँ, फिर क्या बेकार की चीज कर रहा हूँ। तो वहां से बाहर आ गया, फिर मैंने कहा चलो अपनी कंपनी बनाते हैं। देन आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी कॉल्ड CFO for You. Now, coming back from such a high in the career, the first job, you know what I got? The first job was एक दुकान पे Swarovski की जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करना था। आई डिड नॉट हैव एन एम्प्लॉय, आई वेंट पर्सनली टू डू इट, आई डिड इट। तब क्या, ये कहां से आया, ये कॉन्फिडेंस और ये ईगोलेस बिहेवियर कहां से आया? इट वाज DSN, आई टेल यू। DSN टेक्स यू टोटली, जितना भी खिचड़ी अपने लिए इतने सारे टैग लगा के खिचड़ी बना रखे हैं, सब निकल जाता है। कहते काम करो यार, एक्शन लो, कर्मयोग, वो सब कुछ ड्रॉप करो, फालतू का कचरा सब ड्रॉप करो। इतने सारे टैग है, ठीक है, वो थे। दीज टैग्स आर नॉट यू, यू आर बियॉन्ड दीज टैग्स, यू आर बियॉन्ड दीज आइडेंटिटीज, यू आर बियॉन्ड दीज सक्सेसेस। द रियलिटी इज दिस, if it was real, if that was real, it would have stayed, no? That was not real, so it went. क्यों उसको पकड़े बैठे हो अभी भी? So I think this confidence DSN gives. And then the biggest thing, the other big thing that DSN gave me was, हम बहुत सोचते रहते सेवा करना चाहते हैं, सेवा कितने लोग चाहते हैं, अरे सेवा करना है, पर पता नहीं सेवा करे कैसे यार, करे कैसे सेवा, पता ही नहीं, शुरू कहां से करें? That's another avenue. It opens so many avenues. You actually do so much in the 3 or 4 day program that just, and you start to work with people. अकेले तो कुछ मिलता नहीं ना। यू स्टार्ट टू वर्क, कॉमराडरी आ जाती है, टीम वर्क आ जाता है, इतना कुछ आ जाता है ना। मतलब मेरे हिसाब से तो आई थिंक दो 3 years दैट आई kept like trying, failing with full confidence was thanks to DSM. And of course, my regular sadhana. I would not say my sadhana was super regular. As I said, I became teacher during that time, and my Padma sadhana became even more strong, during that time. So yeah. So, Bhaiya, that reminds us of a very important question. Uh, so, at any point in time in your career, did you feel this is not me, this is the hand of the guru, or anything that you think surpassed logic? Any such instance? Yeah, and I think those 3 years were about that. But I will tell you another incident which happened. So this is, I will tell you 2 incidents. You want to listen two or one? Because Two. two, okay. Okay. So once I'd gone for my wife's health checkup. She was not feeling well, and I went for her checkup. And जब चेकअप कराने गए तो उसने बोला यार तुम भी करा लो अपना हेल्थ चेकअप, मेरा कराने आए हो तो हॉस्पिटल तो आए हैं, करा लो। मैंने बोला ठीक है, करा लेते हैं। तो आई वेंट फॉर अ फुल हेल्थ चेकअप ऑल्सो। एंड देन नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट टू द डॉक्टर टू शो द रिपोर्ट्स, तो मैं अपनी वाइफ की रिपोर्ट दिखा के, कनिका की रिपोर्ट दिखा के बोल रहा था इसका रिपोर्ट देखो। बोले वो उनका छोड़ो, आप आ जाओ जरा इधर। मैंने कहा क्या हो गया? बोला आप इमीडिएटली जाके, एंड दिस इज 2014 और 13 और 14, जब मेरे को टीचर बने भी काफी साल हो गए थे। आई वाज डूइंग वेरी रेगुलर साधना, कोर्सेज ले रहा था, खूब खूब सेवा कर रहा था। आई वाज वर्किंग विद फिडेलिटी, सो फुल टाइम जॉब बहुत बढ़िया चल रहा था। आई वाज डूइंग माय ओन योगा क्लासेस ले रहा हूँ योगा की। सर आप अभी की अभी जाके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलो। तो मैं बोला नहीं मैं बिल्कुल फिट हूं। बोले नहीं आप जाइए तुरंत, ये नहीं कल, बोले अभी जाइए, अभी मिलिए। सो इन आर्टिमस आई वेंट टू द हेड ऑफ आर्टिमस एंड शोड माय रिपोर्ट्स। सेम थिंग सेज, आप अभी की अभी एंजियोग्राफी कराइए, यू नीड इट लाइक राइट नाउ। अच्छा पता नहीं क्या हो गया यार ऐसा। So then I went, of course, all of us take second, third opinion. So Kanika and I were there together. We went for second opinion, third opinion. All the opinions were saying, you have to get the angiography right now. And I went for the angiography. And guess what? 99% blockages in both the arteries. Within 1 month, I had 2 angioplasties. I had 6 stents in my heart. But I was always walking into the hospital and walking out of the hospital. Now, you can say, अरे यार हार्ट ऑफ लिविंग होने के बाद भी तेरे को ये सब हो गया। और यू कैन से बिकॉज आई वॉज अ चेन स्मोकर, आई नो आई हैव अब्यूज्ड माय बॉडी फॉर 25 years। 60 सिगरेट रोज की पीता था, खूब दारू पीता था, दबा के नॉन वेज खाता था। ये जिंदगी था ना मेरा।
सो आई डन ऑल दिस, आई अब्यूज माई बॉडी सो मच, उसका कहीं ना कहीं तो कोई रेपोकेशन था, बट ये ग्रेस था कि बिफोर हार्ट अटैक आए, बिफोर कोई घातक कुछ हो, यू नो, I got these stents, and in between the two angioplasties, Gurdev came to Zorba, and I met Gurdev. Gurdev, हाँ हाँ चल ठीक है, करा ले दूसरा भी, बढ़िया है, सब मस्त है. So, so this is grace. What else, right? Then the other incidents I remember, I think 2016 के आसपास, 17 ऐसे कुछ है. So my BP went up, बहुत जबरदस्त बीपी बढ़ गया. तो बीपी बढ़ गया, बोला क्या हो गया, क्या. कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, आई वाज वरीड बिकॉज 6 स्टेंट है तो आई हैव टू बी वरीड. तो ये सब कर करा के 3 4 कार्डियोलॉजिस्ट से मिला, दवाइयां चेंज की, कुछ नहीं हो रहा है. एंड देन सडनली वन डे, जूही, यू नो तृप्ता जी, अ लॉट ऑफ अस नो तृप्ता जी. तृप्ता दीदी कॉल्ड मी अप वन डे सेइंग, पवन वो एचआर हेड्स का कोई समिट हो रहा है जनवरी में, 1 हफ्ते बाद, तेरे को जाके वहां गीता का सेशन लेना. तो मैं बोला कि दीदी मेरे को गीता वीता आता नहीं, मैं पढ़ा नहीं है गीता कभी, और मेरा तबीयत बहुत खराब चल रहा है अभी, मैं कोई सेशन नहीं लूंगा. देन शी लिटरली लाइक, मैं तेरे को कह रही हूँ, मैं तेरे से पूछ नहीं रही हूँ, शी इज वेरी एल्डरली. सो ऐसे लिए गुरु का वाक्य आ रहा है, तो मैं बोला ठीक है दीदी, देखेंगे जो होएगा कर लूंगा. एंड देन आई, जब फोन रखा तो मैं बोला कि अब क्या करूं. सो समबडी गाइडेड मी इन द आश्रम से, अच्छा जाके गुरुदेव की एक बुक है गीता के ऊपर, खरीद ले, वो थोड़ा पढ़ ले, कुछ सेशन बना ले, 2 घंटे का ही तो है, ले लेना. तो एनीवे, मैंने वो किताब मंगाई, गुरुदेव की एक किताब है. इफ यू नॉट रेड, आई वुड वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट यू रीड इट. इट्स कॉल्ड गीता कॉमेंट्री, चैप्टर 1 to 13. ओके. एंड दिस इज थर्सडे, फ्राइडे आई गॉट द बुक, इन 2 days आई रेड 2 chapters ऑफ द बुक. जो मेरा बीपी 170/120 था, बाय संडे इवनिंग माई बीपी वॉज नॉर्मल, जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन. ओके. दिस इज गुरु ग्रेस. आई कॉल्ड अप दत्ता जी इमीडिएटली. अच्छा दत्ता जी, थैंक यू सो मच. बोली तेरे को क्या हो गया, थैंक यू क्या क्या कर रहा है तू? मैं बोला दीदी आपको पता नहीं, ये सेशन लेना एक बहाना था. दिस इज हाउ गुरु वर्क्स. ओके, दिस इज हाउ गुरु वर्क्स इन अवर लाइफ, विदाउट अस नोइंग. इट इज नॉट अपेरेंट, बट ही इज वर्किंग. ओके. वी फील अरे हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, बट ही इज वॉचिंग ऑल द टाइम. गुरुदेव कहते हैं तुम सब मेरे एक एक शरीर के एक एक बाल हो, यू नो. If even one thing, one ball, you pick up and it hurts, right? If you pull it, it hurts. Like that, if we are going through some problem, Guru knows, and he manages. He takes care of all of us. और उसके बाद जब सेशन हुआ, तो उसमें और भी मजा आया. सेशन हुआ तो नेटवर्किंग हो रही है, लोग आए वहां पे मेरे से मिलने. अच्छा आप सेशन ले रहे हो, मैंने कहा हाँ जी. तो वो गीता के श्लोक बोलने लगे. अब बताओ, मैंने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े हैं गीता के, और वो भी कमेंट्री, श्लोक तो पढ़े भी नहीं. एंड दे आर आर्ग्यूइंग अबाउट, अरे ये श्लोक क्या है, क्या अमेजिंग श्लोक है, एंड आई हैड नो आइडिया. ऐसे आज तो सेशन में गुरु ग्रेस ही काम करेगा और कुछ काम नहीं कर सकता. एंड देन द एग्जैक्टली द सेम थिंग वर्क. सेशन हैपेंड, आई एंजॉयड द सेशन, 2 घंटा मस्ती किया, 50 60 CHROs थे. सेशन के बाद वही दोनों जने आके मेरे से मिले, बोले अरे आपने जो ये पर्सपेक्टिव क्लियर किया हमारा गीता पे, ये तो हमारे को बहुत बड़ा कंफ्यूजन था. किसने क्लियर किया, आई हैड नो आइडिया. व्हेन आई एम टेकिंग अ सेशन, गुरुदेव टेक्स ओवर टोटली, and that's what happened. So people benefit, it happens. You have to just, if you're holding on, it will not happen. Okay. You have to do your karma and then surrender. वो जरूरी है. कई लोग सरेंडर कर देते हैं पहले से, वो भी ठीक नहीं है, वो तो बिल्कुल ही गलत है. ठीक है. कर्म अपना 100% डाल दो, उसके बाद सरेंडर, एंड देन यू सी मैजिक हैपेंस. एंड दैट मैजिक इज हैपनिंग एवर सिंस. मतलब कितने मैजिक हुए हैं, कितने मैजिक हुए हैं. So I can go on and on. This Gita story is one of my favorite Guru stories ever, and I'm happy to share that I've heard that earlier in person. So, Bhaiya, are you also okay for a rapid fire round? Is that okay? Yeah. Okay. All right. Okay. Let's go for it. Any other questions? We'll come back to more questions, but I thought a lot of people were pinging me. Do we also have a rapid fire? So here we have one. And if are you liking this session? If you are, please drop a heart. We'd like to see you dropping a heart here if you're loving this conversation. Lovely. Amazing. We are flooded with so many red hearts. Lovely. Yep. Thank you so much. सो भैया विल स्टार्ट. ये रैपिड फायर आप ज्यादा टाइम नहीं ले सकते. एनडीएसएन आई थिंक टीचर्स यू कि जल्दी से जवाब दो, तो थोड़ा आपको भी वैसे. Yeah. Okay. I'm इफ यू हैव prepared. टू चूज वन बिटवीन योर फर्स्ट जॉब और योर करंट जॉब, व्हाट वुड दैट? I would say here and now.
जो था वो तो था, तो क्या। Correct. Lovely. And in a world where layoffs are happening almost every other month and AI, artificial intelligence, is taking over. So, what's your mantra for us professionals? I think the only mantra I can give you is learn, unlearn, and relearn. I think the age of AI, I tell you the relevance of knowledge today, I've given you the answer, now I can elaborate, right? So in the, what I've realized is the relevance of knowledge. You know what the relevance of knowledge is? Relevance of knowledge is what you study, how long does it stay relevant, right? And then things change and new perspectives come. So the relevance of knowledge used to be a few years earlier in our times, maybe 10 saal, 15 saal hota tha. Then it started to reduce. Today, the relevance of knowledge is a few months. So if we are still stuck with not learning, not unlearning. See, एक होता है learn, एक होता है learn, and then you have to unlearn, and then you have to relearn, and that's a constant process. So you have to get into that of learn, unlearn, and relearn. That's the only thing I can say in this world, in today's world. This one is straight like one of the stuff that TED Talks are made of. So, great. Great Wow, lesson for us wow, to take. wow. One, our favorite question, one priceless management lesson you received from G. Anything that Gurudev's taught you? So much, yeah. I know I can go on and on. But I think the one big thing that I'm practicing these days is I think life is a perfect combination of passion and dispassion. It's like breathing in. You can't just have passion all the time. You can't just keep breathing in all the time. At some point of time, you have to breathe out. You have to let go. You have to rest. There has to be dispassion. Very important. But we keep going on and on as if or we're totally dispassionate. So it's a combination, I feel. And Gurudev says all the time, just karma and rest. Karma and rest. Passion and dispassion. I think that's the biggest one. Found. Any antidote to daily stress? Don't say Sudarshan Kriya. Any... You've stolen my answer, but I think it's a 5S that we learn. All of us have learned that 5S formula in our happiness course. Sadhana, Seva, Satsang, Swadhyay, and Smile. So I think those are the 5 S's. I tell you from the first day I did the course, and I'm not joking, I've not left any one of the five. Sometimes the intensity of one of them goes down, कुछ ऊपर कुछ नीचे थोड़ा सा imbalance चलता रहता है. And I know the moment that imbalance happens in these 5 S's, जीवन में भी imbalance आना शुरू हो जाता है. But the more I'm able to maintain the 5S balance in my life, the life is irrespective of what is happening, मैं मस्त रहता हूँ. Someone just messaged me your favorite book and show. Favorite book and अच्छा, favorite. देखो मेरी कोई फेवरेट बुक नहीं. मैं पढ़ाई में बहुत गंदा था. मैं पढ़ाई से मैं भागता हूँ. मेरा डेस्क बिल्कुल खाली है. एक भी बुक नहीं है यहाँ पे. द ओनली बुक आई रेड इज द आर्ट ऑफ लिविंग मैनुअल ऑफ हैप्पीनेस कोर्स. वो भी पढ़ना पड़ा था मेरे को. तो मैं I'm not a reader at all. But I think one book I read long time back in my childhood was Khalil Gibran's The Prophet, and it had a lot of impact on my life. So that's where my philosophy journey started, I would say. Very nice. Any preferred trait that you think every employee today must have? I think I mean, I'm a finance person. First, I'll tell you from a finance perspective what I feel. And a lot of us, even in management, as leaders, we grapple with a lot of data and we are constantly in the data. I would say we have to start to move from data to information to insight to storytelling. And those are the four pillars, I would say. We get stuck on one of them. Mostly people get stuck on, oh, I've got this actionable insight, or I've got this lot of information. We have to move. If you want to succeed in life, storytelling is so powerful, I tell you. My success in this life, in my professional life, I would attribute a lot to my ability, which I've developed over a period of time. It doesn't come naturally. You have to nurture, you have to develop, you have to work on it. It's a storytelling. You have to be able to tell your story, whatever. If you're going for a presentation, it's a 1 hour presentation, first 4 minutes, if you've caught the attention of people in the room, you've won it. If you've not, you've lost it. You can do presentation for 3 hours, nothing's going to go in. So that's, I think, the most powerful. Very important. And also, like, since you're saying, well, I think one more thing
which actually has come only after meditation, regular meditation, is intuition, gut feeling. Yeah, the intuition has become very strong. So now a lot of my decisions as a leader or in my personal life also are driven by gut feel and intuition. Is say, wow, this is the logic or the information or the insight or the whatever is in front of me sometimes is telling me very different. But when that comes and you have to identify, you have to start to, and the lesser the clutter in the mind, the more our ability to catch that intuitive thought. We all get it, but it get mixed up with illusion. Very profound. So, most useless management tip you've ever received in your life? Most useless. We often use this phrase called think out of box. I think I feel it's lost its relevance. Everything is out of box right now. You can't think in the box. There's nothing in the box right now. Everything is out of the box. Yes. So, Any funny story connected to Gurudev or anything? It could be a guru story, it could be an instance it's a or a very memory probably. yes, a lot of stories, but I think one story मैं ना नाराज हो गया था गुरुजी से. कितने लोग नाराज में हैं गुरुजी से? सभी लोग. तो मैं भी हो गया था एक दफा. मैंने कहा मैं जैसे होता है ना, हाथी के पैर पे चींटी बैठा होता है, चींटी सोचती है हाथी से नाराज हो जाती है. मैं भी ऐसे हो गया. अल्लाह, अरे मैं गुरुजी से नाराज हूँ. गुरुजी को मेरा नाम भी नहीं पता था. She didn't even know me, but I thought that he's not looking at me these days. जब भी मैं दर्शन लाइन में जाता हूँ या कहीं वसंत विहार में मिलने जा रहा हूँ, वो देख ही नहीं रहे मेरी तरफ, एकदम इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल नाराज. मैंने कहा कनिका मैं जाऊंगा ही नहीं मिलने, जब तक वो नहीं मेरे से बोलेंगे मैं जाऊंगा ही नहीं. अपने मन में ही सोच के बैठ गया. And then by chance there was a party of Pricewaterhouse, ex-alumni party of Pricewaterhouse, and I went there and the CEO there met me. एंड सेज पवन, क्या यार तू तो गुरुजी के फोटोज लगाता रहता है, गुरुजी के बारे में इतना कुछ, क्या है गुरु, अब हमें भी मिलवा अपने गुरु से. लाइक यूजुअली दिस कॉर्पोरेट हाई फ्लाइट से ना, अरे हमें भी मिलवा अपने गुरु से. मैंने कहा दीपक ऐसा है कि मैं मिलवा तो दूंगा बट कुछ सेवा वेवा करोगे, तो सेवा वेवा करोगे तो जरूर मिलाएंगे. गुरुजी तो सबसे मिलते हैं जो सेवा करते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल सेवा करेंगे, बोला. And he promised that time only, and he was under, it was the evening party, so you can understand what was the state. So he said, पवन मैं इतने कंसल्टिंग आवर्स करूंगा ये वो. तो मैंने कहा देखो दीपक, सुबह अगर रियली यू वांट मीट, दिस इज नॉट द राइट टाइम और माहौल नहीं है, सवेरे मेरे को फोन करना, वी कैन टॉक. Next day morning, 9 o'clock, he calls me up. He says, Pawan, I was very serious. I want to meet him and I want to do a lot of seva from the company side for them. I said, ठीक है जी. So he committed to me that X number of free consulting hours we'll do, etc. And I called up the secretary of Gurudev. I had never done that because मेरे को पता नहीं था. उससे पहले भी मैंने ईमेल लिखी गुरुजी को. हाँ, I wrote an email to गुरुजी saying गुरुजी इस तरह से है and this person wants to meet you, so आप बताओ. And गुरुजी का एक लाइन का, एक वर्ड का रिप्लाई आया. You know what that word was? Blessings. अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ इसका क्या करूं मैं. ब्लेसिंग्स तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे क्या आई हैड नो आइडिया. आई कॉल्ड अप उसे कहते भरत विच यूज्ड टू बी द सेक्रेटरी. कॉल्ड अप भरत भैया, भरत भैया ऐसे ऐसे है. तो बोले अरे तू मेरे को अब लास्ट मिनट बता रहे हो गुरुजी आज आ रहे हैं, तुमने को अब. अरे मैंने कहा आज आ रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है. अच्छा आज आ रहे हैं. Says, हाँ हाँ आज आ रहे हैं. तो इन द इवनिंग ही कॉल मी, अब कल का अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है शाम का, तुम लेके आ जाना. Next day, I went to Sant Vihar, Ashimaji's house, and Kanika, me, and the CEO and his wife, and Sarthak, my son. Five of us went there, as if there was a VIP thing. Right from the grate on the ground floor to the third floor when we went, it was like, oh, Pawan ji, हाँ जी, आइए, आइए, आइए. It was like I've never even gone upstairs to meet Gurudev. मैं तो हमेशा बाहर से ही गुरुदेव को मिलता था. And the moment I entered the room, he looks at me. अच्छा आ गया तू? मैंने कहा हाँ गुरुदेव. And then I enter, we are sitting down, and I'm introducing Deepak as a Guruji, ये प्राइस वाटरहाउस के ये वो हैं. And I was sitting next to गुरुदेव नीचे जमीन पे, मेरी तरफ देख के, उसको देख ही नहीं रहे, मेरी तरफ देख के, अब तो खुश है. That's all he said. You know, I don't know if it is funny or not, but it was a revelation to me that I thought he doesn't know me, but he knows me and he knows all of us. A lot of Wait, stuff. sorry, I out of line, but I want to share this. I've been very angry with Gurudev last 4 5 days. But yesterday morning from Thuttukudi, I got a video call from him, and he asked me,
What is the problem? Look at So that. I have tears because you have a lot of access to Gurudev, and a lot of us probably feel कि अरे पता नहीं गुरुदेव को पता है नहीं पता है. But that moment when you need him, he just so I wish this session doesn't end and it just goes on and on. But abhi while interacting with you bhaiya, I have got two queries asking about the DSN program. So can we put the details here or something about the WhatsApp group or something Yeah, that we people. can. So there is one that I'm taking in March. So yeah, sure. Yeah, because a lot of people are saying हमको पूरा master class चाहिए. So I Uh, think we should, yeah. we'll have a lot of fun. Yeah. And there's a very surprise element in this DSN. I won't tell you right now. You'll hear in the next couple of days. If you register, then you'll hear. But that's a very big surprise. Very big surprise. Wow. Lovely. So, what we can do is in the group, the details of the program will be flashed. And you can, if you feel that somebody can benefit out of whatever we discussed here today, you can pass on this information uh, to any two or three of your contacts. And we'll make sure that that person is also able to get the advantage. Even if they've not done the happiness program, we'll make it happen because we're sitting here as catalysts of professional growth. Yeah. So, And we can take a couple of questions. If there is any live question, I'm happy to take so in 3 minutes. anybody has a question? You can please write. Yeah. So Aditya has a question, Bhaiya. What was that special factor in your work which made you a CFO at the age of 32? Oh, the superb question. And thanks for reminding me, actually. I was thinking that in this session, I should definitely share. There are two things that I did early on in my career. One, I was looking at a mindset of a owner because I had started that factory at 17. So, very early on, I started to develop that owner mindset. And every job that I was doing also, my intent used to be कि मैं जो भी हाथ में ले रहा हूं ना, I make it gold. I transform it, I create an impact. So that ownership mindset was there. So that was one. The second thing was I used to find the most troublesome areas in my department. So I was a accountant in Hewlett Packard, and I was just अच्छा कौन सा एरिया कोई नहीं करना चाहता और कौन सा एरिया फटा हुआ है मुझे दे दो. And it's easy, no? If you go to a manager and say बहुत बढ़िया एरिया कोई है ये मेरे को दे दो, they will never give you. Right? If you go to a manager and say, "अच्छा ये फटा हुआ area मेरे को दे दो," I'll do something about it. And then you transform and give it back. So what I did was in Hewlett Packard, especially 5 years, I kept taking all these fatawa areas and I kept like, trying new things. Virtually every department of finance I tried in the 5, 6 years. Treasury भी किया, business finance भी किया, local legal भी किया, reconciliation भी, accounts payable भी, general ledger भी. Like people who are accountants know all these terms, but literally. So what I'm trying to say is that I kept laterally moving. We want to only move up. I kept laterally moving and trying different things. So I created a bouquet of competencies, professional competencies, and that prepared me because when I wrote in my CA in my resume after that hey, I've done treasury also, I've done taxation also, I've done business finance also, I've done pricing also, I've done controllership also. Then that was pretty much what CFO does. They manage also. If you've got exposure to all the areas, you are up for the game. Now, of course, there was a risk. I used to cry every day when I became CFO. You should also know that when you take a big leap, you should be prepared for hard work, super hard work. And I'm not joking. I should come every day in the evening and cry in front of Kanika. I said, "पता नहीं मैंने क्यों ले लिया ये job?" Because it was beyond my experience. It's not easy when you're surrounded by professional and seasoned CXOs, and you are a new at the 32 years of age. You're a finance professional, young guy. But 1 year was very tough. But sail through. It was interesting. So I'm bombarded with questions now. So how to balance seva and career? Deepak wants to know. देखो ये ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको. It is not, life is not that way. It's not multi-dimensional. For me, it is not multi-dimensional. I'm always doing seva and I'm always at work. This is my office. This is my personal computer. On my right hand side is my office computer. Here you can see is my bansuri, which is my hobby.
And here's my Guru Puja. So, like it's all integrated life. Okay. I got fed up with doing work, and I must tell you, a few years back, and I went to Gurudev. 2, 3 times I asked Gurudev, हो गया बस, let me come out. And he says, नहीं नहीं वहीं रहो, तुम बहुत कर रहे हो, वहीं रहो अभी, don't come out. So I'm like, how do I make? I'm not getting motivated to work. So like, why? What is happening? Like, why do I do this? So that's what I get introspecting, and one answer came. I said, you have to reorient the purpose of your life. Okay, you are saying purpose of your life is seva or what or whatever. Like, we all have purpose of life. And I redefined the purpose of my life. And that purpose of life is very simple, and I'm no problems in sharing it with you. It's to be happy and to spread happiness. As simple as that. And believe you me, every moment, whether I'm in office or I'm sitting here with you all, or I'm at home, or I'm with friends, that is the orientation. My meetings are half an hour meetings, but they end in 10 minutes. Balance 20 minutes is fun, is belongingness, is masti, is bringing smile on people's faces. Because actually, and we all know, एक एक घंटे की मीटिंग करते हैं हम, काम की बात 10 मिनट होती है, यस और नो? इससे ज्यादा नहीं होती. तो वही होता है अभी भी, आधे घंटे की मीटिंग है, 10 मिनट काम की बात किया, खत्म हो गया. उसके बाद आई एम ऑन माई पर्पस. सो डोंट थिंक दैट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. फाइंड गैप्स. अरे हम इतना कुछ, हमको सबको पता है कितना टाइम रील देखने में बिताते हैं हम लोग, कितना टाइम. एंड डोंट फूल योरसेल्फ. स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ बाय सेइंग मेरे पास टाइम नहीं है. हम सबके पास बहुत टाइम है. किसी ने एक जोक बोला था, बोला जब तक व्हाट्सएप नहीं आया था मेरे को लगता था मेरे सारे दोस्त बड़े ज्यादा बिजी हैं. जैसे ही व्हाट्सएप आया पता लगा सारे वेले बैठे हैं, 1 सेकंड में आंसर आ जाता है ना. तो ये बेवकूफ बनाना बंद करो कि टाइम नहीं है हमारे पास बैलेंस करने के लिए, सेवा करने के लिए टाइम नहीं है, या अपनी हॉबीज के लिए टाइम नहीं है. आई एम 58. 1 year back I've started to learn bansuri. In spite of my 4 roles, I'm playing 4 roles in the corporate, in my office right now. I'm the CFO, I'm the Chief Administrative Officer, I'm managing global reporting for the company, and I'm helping develop the domestic business for the company. And this is a 14,000 people company, not a small company. Plus, I'm taking these sessions, plus, I take courses, plus, I am doing my own sadhana 1.5 hours every day, plus, I'm doing Bansuri practice every day. Plus, I'm doing reels also. Plus, I'm doing social media also. It's not that I'm not doing. Plus, I'm sleeping also, and I'm spending time with the family also. I'm not a magician, my dear. I'm not a magician. We all have the same time, the same 24 hours. It is the orientation. It is our orientation. No, are we oriented कि मैं पहले अपना काम करूं तो काम कर रहा हूं? अरे ऐसे कुछ नहीं है यार. काम कर रहे हो तो 100% करो. You're living knowledge, no? And if you're living knowledge, you're enjoying it. गंदे से गंदा काम 100% डाल के करना शुरू कर दो, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट. फॉर्मूला है एकदम, Yeah. एकदम फॉर्मूला है, सिंपल. Beautiful lesson. Beautiful. Niyati wants to ask how to balance gut instinct and logical thinking when making difficult decisions. यू हैव टू फर्स्ट मेक योर गट फील स्ट्रांग. ऐसे मत कर देना कि सीधा कूद जाओ गट फीलिंग के ऊपर ना, फिर तो इमेजिनेशन कर रहे हो. You have to do a sadhana very regularly to make sure that your mind is so clear. आपके जब तक क्रेविंग, अवर्जन, फियर्स, वरीज कम नहीं होंगे ना, तब तक गट फील काम नहीं करेगा, माय डियर. वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दैट. द क्लेंजिंग हैज टू बी देयर. जाके एडवांस कोर्स में बैठो, गंद को साफ करो. ये जो गार्बेज लेके बैठे ना, इसको सफाई करो. ये गार्बेज साफ होगा ना तो अपने आप से तुमको आइडेंटिफाई, तो अपने आप एक स्ट्रेंथ अंदर से एकदम आएगा. यू विल बी इन दैट फ्लो स्टेट. See, all the leaders globally, you will find they do something or the other and they are in a flow state. वो सोचते हैं, वो कभी सामने डेटा जो आ रहा है, जो इंसाइट आ रही है, उसके ऊपर नहीं चलते. उनके दिमाग में आइडिया आता है. वो आइडिया कब आता है? जब मन शांत होता है. ग्रेविटी कब आविष्कार हुआ था? ग्रेविटी का हाँ, लैब में बैठ के हुआ था क्या? पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तब हुआ. Which means what the meaning of that is that your mind has to be absolutely calm. When your mind is calm, you're in that centered state all the time. You're in that happy state, energetic, स्व अस्त अपने अंदर established हो हर मोमेंट में, तो गट फील हर वक्त काम करेगा आपका. All the time that gut feel is going to be working. Yeah, last 2 minutes. So I think Kushagra that answered your question. So his question was also on the similar line. Okay. And, I don't know why my hand is raised. I didn't even yeah, I realize. was just seeing that.
Yeah. Priyanshi asks, what daily habit helped you reset yourself mentally when things went wrong? Daily habit. डेली हैबिट वाज डिसिप्लिन आई टेल यू मेरे को तो सिर्फ ये लगता है कि मैं बताऊं आपको जब मैंने अपना काम शुरू किया 2009-10 में मैंने अपनी कंपनी खोली दिस इज द एग्जैक्टली दिस ऑफिस आई मेड एट दैट टाइम दिस इज द सेकंड फ्लोर ऑफ आवर हाउस वी स्टे ऑन द फर्स्ट फ्लोर ये मैंने तभी बनाया था ऑफिस मेरे पास कोई काम नहीं था कुछ काम नहीं था कुछ करने को नहीं था 9 बजे ऐसे ही सूट बूट डाल के तैयार होके नाश्ता करके मैं ऊपर आ जाता था दिन भर कुछ करने को नहीं होता था सिर्फ आधे घंटे लंच के लिए नीचे जाके लंच करके फिर ऊपर आ जाता था 4 साढ़े 4 बजे शाम को कनिका ऊपर आती थी चाय का ट्रे लेके हम लोग बैठ के गप मारते थे चाय पीते थे थोड़ा हंसी मजाक करते थे बट दैट रूटीन नेवर वेंट and of course my sadhana of course needless to say my sadhana is my me time I tell you I don't compromise it for anything okay that 1 hour of my time is something that is the most precious I'm ruthless about it whether I travel a lot whether I'm traveling or I'm working or there is some very, very important work or courses or whatever, my sadhana is important for me. That is the fuel. That is actually I don't even take कि मुझे साधना करनी है मतलब मैं छोड़ ही नहीं सकता आई जस्ट लव इट सो मच जस्ट सच सो डियर टू मी उसका जुनून मेरे को सबसे ज्यादा है तो वो डिसिप्लिन तो चाहिए भाई वो तो उसके बगैर तो कुछ नहीं होता नथिंग विल हैपन आई टेल यू Fantastic discussion. This is like a so many Harvard Business Reviews in action and such beautiful practical aspects you've shared, भैया. So यहाँ पे एक chat में हमको एक form दिख रहा होगा. We can express our interest towards the upcoming DSN program through the form. Yeah. Cool. All right. We can unmute if people want to share, unmute themselves and You can share some feedback, yeah, anything. yeah, whatever you want to ask anything or share something. Just I would rather say share what you felt about the session. It'd be nice for me to improve of how we conduct these type of sessions. Anybody can do that. Yeah, now it is. Jai Gurudev. Thank you, Pavan Bhaiya. Thank you, Juhidi, for incorporating this session. So I learned a lot and I felt great. Like there were some queries that I had before the session. So thank you for answering those queries. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Thanks, Neti. Thanks very much for joining. And actually, this is the beauty. I must appreciate Juhi. इतने skillfully इसने सवाल पूछे कि खोद खोद के इधर उधर से सारा कुछ निकाला है इसने. So that's also a very big skill. No, we have to give a big round of applause to Juhi. Such a wonderful, Kudos. such a wonderful host. All the magic here. Grace. And we've got Nilanshu, who's been managing all the technology and all the back end work of creating this session. Again, a big round of applause for him. Amazing. These are all stars. Now, Shubham is there. Kanika is there. There's so many stars. Kanika is the star of my life anyway. Okay, anything else? हाँ बोलो. हाँ, Sunil. Yeah, Bhaiya. So I just happened to get a message from you directly. So I feel so grateful to, I'm kind of praying to Gurudev that I need some clarity regarding the career aspect and see, like, how can somebody from Art of Living happen to come to you directly in inbox? So I really like the way you put the learnings from your life, like in a very small gist. I mean, if implemented, I think I could see that it can really help us in big time. So thank you so much. And I wish I was in Delhi to kind of do seva, but I am in Bangalore right now. So I really send a lot of blessings. And if anybody is there, I would know, I'll surely send them there. Yeah. Thank you. Very good. Thank you so much, Sunil. Yeah. Need a Thank lot you. of love. Thank you so much, Bhaiya. It was really inspiring, and I learned a lot in this session. Excellent, Aditya. Very good. Thank you. Thank you. Jai Gurudev. So, Jai Gurudev, Vishal. Jai Gurudev Pawan Bhaiya. I would like to share the things. So, आप जो बता रहे थे आपका करियर जर्नी एंड द स्टोरीज लाइक गुरुदेव स्टोरीज सो मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था जैसे लग रहा था कि ओ ये तो मेरे साथ भी हुआ है एंड फ्यू थिंग्स लाइक कि बहुत क्लियरिटी आई लाइक जूही दीदी के जो क्वेश्चंस थे उससे लॉट्स ऑफ क्लियरिटीज लाइक पर्पज एंड थिंग्स आल्सो या इट्स रियली ग्रेटफुल सेशन थैंक यू फॉर दिस सेशन Thanks, Vishal. जय गुरुदेव Jai Gurudev. Jai Gurudev.
Sunil, I think, has raised his hand. हाँ, बोलो बोलो. Just start unmuting and speaking up. Don't wait. हाँ, हाँ, हेलो। जय गुरुदेव भैया। ठीक है. तो मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि ऊपरी ऊपरी बातें नहीं है। मैं भी फिलहाल कॉर्पोरेट में ही जॉब करती हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें कभी कभी ना भैया थोड़ा सा ना वो रजिस्ट करने लगते हैं। बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें होती है तो सेशन बहुत रिलेटिव था। मतलब ऐसा कनेक्ट कर पा रहे थे बहुत कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कभी मन नहीं करता, कभी कभी मतलब गुरुदेव से जैसे आपने बोला नाराज हो जाते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो मतलब बहुत सारे रिलेट कर पा रहे थे सेशन को ना। और मतलब कैसे प्रैक्टिकली उससे निकल सकते हैं उन सब चीजों से जिसमें हम फंसे हुए हैं। तो वो प्रैक्टिकलिटी लगी मतलब मुझे सेशन में। Very good. No, thanks for coming. What's your name? Your name is not coming here. माय नेम इज नेहा सिंघल। Okay, Neha. Lovely meeting you, Neha. Thank you so much. या सेम है, थैंक यू भैया। Okay. Hello. 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 Good evening, Pavan Bhaiya. Though I'm of your age, I can call you Pavanji, but it's better that way. Whatever you And it feel was comfortable. awesome. It was an awesome session. And I am also working. But the thing is, it was awesome session. I really don't have words to express it. I could relate many things to you, but I need to learn many things from you. First, to start with, how to learn discipline. देखो, डिसिप्लिन ना लर्न क्या करना है, वो तो करना ही है. इसमें कोई लर्न का नहीं है. अगर आप अपने मन से जीतना शुरू कर दोगे ना, यू स्टॉप लिसनिंग टू जस्ट योर मन, देन ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन स्टार्ट. बिकॉज हमको सबको पता ही है क्या करना ठीक है हमारे लिए. बट हम जो चॉइसेस आती है ना हमारे सामने, हम वो कन्वीनियंट चॉइस आते हैं. नहीं, मन नहीं है, रजाई में थोड़ा और सोने का मन है, तो सो जाओ 1 घंटा और. तो बस उस वक्त अपने मन को पकड़ना है बस. बट वो एक ही स्टेप है. आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट, इट इज नॉट लाइक अ टू मच अ हार्ड वर्क. इट इज जस्ट ओरिएंटेशन, दैट स्मॉल ओरिएंटेशन कि नहीं, आएगा, मेरे को पता है वो मोमेंट आएगा मेरे साथ. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मोमेंट. आपका मन आपको बेवकूफ बनाएगा. सो व्हेन यू आर स्लीपिंग ओनली, रिमेंबर दैट कि मेरे को सवेरे पता है, जब मैं उठना शुरू करूंगी 1 घंटे पहले, वो मन में दिमाग में आएगा ये, एंड थोड़ी आई विल हैव टू बीट इट. देखो, वो डिटर्मिनेशन की बात है, बस उतना ही. फिर जब वो होगा, 1 सेकंड में रजाई हटाया, खड़े हो गए, उसके बाद खत्म हो जाएगा. फिर वो मूड वाला मामला अपने आप खत्म. इट्स जस्ट दैट, देयर इज नो अदर देर गोल्डन फॉर्मूला. I'm having a lot of mood swings. I'm more governed by moods of late. हाँ, आप सहज करो दिन में 2 बार. Okay, Bhaiya. Thank you so much. Thank you. Hello, sir. ठीक होता है. It was my first session with you, but I need to say that I had a lot of queries, but they seem to be resolved after the session. So, first of all, a big thanks for you. Thanks to you for that. And secondly, I would like to say I am also on the verge of entering into corporate. So, a lot of things I was able to relate. I was able to be like, okay, yeah, this is something I have also felt some way or the other. So, thanks a lot for sharing the tips and everything. Jai I'm glad Gurudev. that my experience is resonating with young people like you also. It is so nice to hear that. Yes, it definitely is. Okay, thank you very much. Good. Okay, anybody else? You can see Sunil there. Sunil is there, is it? हो गया भैया, I just spoke up. Okay, हो गया Sunil का. Yeah. Anybody else? Chalo, wonderful. No, thanks a lot. All the very best, and keep smiling. I'm always available for any support, any help that you need, any guidance, any coaching you need. I'm always available. So don't hesitate. Reach out. If I don't have time, drop a message and I'll find some time. Okay. Otherwise, keep attending some sessions. अगर DSN करने का मन हो, कर लो. Lanshu, you can put the poster in, and if people want, they can. If you want to register. We'll have a lot of fun. I can promise you one thing, that 3 साढ़े 3 दिन खूब मस्ती करने वाले हैं हम लोग. And as I said, there is something which is very special coming in along with this course also. So that's another, I would say, cherry on the cake. पूरा केक ही है जो आने वाला है उसके ऊपर. ठीक है.
So all the best. Jai Guru Dev. Lots of love to all of you.